Good afternoon. Good afternoon, everyone. Welcome, everyone. So, let's first start the images. Is the audio video clear? Is the audio video clear? Okay, so let's start it. First of all, what is this image? What is this image? What is this image, dear? This is Bartholin cyst, right? How you will identify it is a Bartholin cyst? See, this is labia majora. Okay, this is labia majora and this is minora. This is minora. Okay, and here is the swelling. It is inner to labia minora. Okay, it is inner to labia minora, and between it is between labia minora. Dr. Sahab, I have sent it in the telegram. Dr. Sahab, I have sent it in the telegram group. I will just check in the telegram group. Are you there in the telegram group? I am resending it now. Are you there in the telegram group? Okay, just check it now. I am resending it. Have you got it? Just recheck now. Have you got it? It will be tomorrow, Dr. Pritesh. It will be tomorrow. Doctor Sahab, I have resent it in the group. There are two groups. One is chat group, quiz group, and one is the channel. I am sending it in the channel too. Okay? I have sent it in both the groups. Doctor Sahab, have you got it? Okay. Okay. So this is labia majora and this is minora. What is most commonly asked in this? What is most commonly asked in this is, see, question number 1: where does the Bartholin cyst is present? First of all, you have to identify. Okay, so you will identify that it is inner to labia minora. Inner to labia minora, a swelling is there. Okay, so there are three options which are right. Okay, first of all, it is at anterior 2/3 and posterior 1/3. Okay, of vestibule. Vestibule. It is at 5 o'clock, 5 o'clock and 7 o'clock position. Okay, is it okay? And number third is, come on everybody. And number third is in the vestibule. Vestibule, inner to labia minora. All these options are right. In between labia minora and groove. Okay, what is its treatment? Last question. What is its treatment? What is the treatment? Come on everybody. Marsupialization. Why its treatment is marsupialization? Because this cysts do reoccur. All are true. All are true. Anterior 2/3 and posterior 1/3 of vestibule. 5 o'clock, 7 o'clock position in the vestibule. All are true. In between the labia minora and all are true. Okay? Its treatment is marsupialization. It is not IND, doctor. Its treatment is marsupialization. What is marsupialization? What is marsupialization? Can anybody tell me? In this, what we do when we are
incising the cyst wall, then we are stitching that. यहाँ पे हमने कट दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कट दिया और इससे जो सिस्ट के दो पोर्शंस हुए वो हमने यहाँ पे स्टिच कर दिए, ठीक है. टू फ्लैप्स ऑफ द सिस्ट आर स्टिच हेयर आउटवर्ड्स, सो दैट कि फ्यूचर में जब भी सिस्ट बनती है तो वो ड्रेन हो जाए, ठीक है. व्हाट इज दिस प्रोसीजर डन? व्हाट इज दिस प्रोसीजर डन? दिस इज internal iliac artery का anterior branch. It can be asked, anterior branch of internal iliac artery. When do we do this procedure? Internal artery ligation. And when do we do this procedure? We do this in PPH, because if the PPH is not controlled by what procedure, then we will do it. Can you tell me? If the PPH is not controlled by which procedure? B-Lynch. If the PPH is not controlled by B-Lynch, then we do the artery ligation. Okay. What is the structure A here? What is the structure A here? This structure. These all are PYQs. Okay. I am not making this question. These all are PYQs. What is this structure? Come on, everybody. This is levator ani. This A is levator ani. So levator ani is not like a you can say it is not it is not a transverse muscle. It is a very strong muscle. All of you will see in the camera. Just see that this is the pen. This pen is the uterus and it is like this. And it is like this. This pen is the uterus and the levator ani is my hands. Okay, so it is going diagonally. It is going diagonally. Good. It is the main support of. It is the main support of uterus. Okay. Mackenrod is main support or levator ani is main support? Levator ani is the main support. Okay. It is made up of which three type of muscle fibers? Can you tell me? Puborectalis. Yes, coccygeus and iliococcygeus. Okay, which is injured? Which is injured in prolapse? Sorry, which is injured in episiotomy and which is injured in prolapse? Pubococcygeus is injured in episiotomy and puborectalis is weak in prolapse. Why it is so? Why it is so? Because episiotomy we give posteriorly, pubococcygeus goes posteriorly and prolapse is usually cystocele and puborectal. What is this? What is this? This is a hysteroscopic image. This is a hysteroscopic image. What does this image tells? Come on, everybody. This is an image of submucosal fibroid. Submucosal fibroid. How you will see, why you are saying that it is a submucosal fibroid? Because it is it is round in structure. Okay. It is round in structure. And on hysteroscopy, we can see only submucosal fibroid. Okay. How we will remove it? Because it is truly submucosal. So, we will remove it hysteroscopically. So, we will remove it hysteroscopic. Hysteroscopic removal. Okay. Serosal fibroid are removed. Serosal fibroid, we remove serosal fibroid by laparoscopy. Okay, we remove serosal fibroid by laparoscopy. We remove serosal fibroid by laparoscopy. Okay, I think there is some problem.
Just give me 1 minute. There is some problem. Okay, what is this? What is this image? What is this image? This hysteroscopic removal will be written everywhere. Okay, don't mind. Then it will take us 10 minutes to do that. Okay, what is this image? This image is of, yeah. What is this? This was submucosal fibroid. Okay, and how was subserosal fibroid removed? Subserosal fibroid are removed. Yes. How are subserosal fibroid removed? The subserosal fibroid are removed by laparoscopy because they are in the peritoneum. Very good. What is this image? This is Asherman syndrome. Okay, this is Asherman syndrome. These are adhesions. Okay, these are adhesions, right? This is Asherman syndrome. And what is the treatment? What is the etiology of Asherman? What is the etiology of Asherman? Come on, everybody. Let us do the session fast. What is the etiology of Asherman? It is vigorous DNC. And what is the second etiology? Come on, everybody. What is the second etiology? TB. It is genital TB. Okay. And what is the treatment? How does the Asherman patient present to us? How does the Asherman syndrome present to us? Hypomenorrhea. Hypomenorrhea. Most commonly present to us as amenorrhea. Second most common presentation is hypomenorrhea. How do we investigate this? First of all, what do we do for amenorrhea? We get the FSH done. If FSH is normal, then we will get the what are the two diagnoses if FSH is normal? If in secondary amenorrhea FSH is normal, then the two diagnoses are PCOS or Asherman. In the Asherman, the history of intensive curettage is there. Or in the PCOS, there is hirsutism history. Very good. Okay. What is the investigation for Asherman after FSH? It is hysteroscopic. What is its treatment? Highly expected question this time. Treatment of Asherman. Yes, what is its treatment? Its treatment is, yes, hysteroscopically removal of adhesion. Don't mark in the exam laparoscopically. Hysteroscopic adhesiolysis. Along with that, what else you will do? Plus, this plus is very important. You all know there are adhesions. Increase estrogen. High dose estrogen is to be given for the endometrium to proliferate. Plus, one more plus is there. Intrauterine pediatric catheter. Okay,
In here in the periphery we put copper T. Okay, so that why we put this catheter? So that once again anterior and posterior wall do not fuse. Very good. What is this cannula? What is this? Leach-Wilkinson cannula. Leach-Wilkinson cannula. What it is done for? For it is this screw wala end. This screwed end is put into the female cervix, and it is used in HSG for tubal patency. HSG is the best test for tubal patency. Tubal patency. Investigation of choice for tubal patency is HSG. Okay. What do we put through this another end? We put the radiographic dye. Don't ever say methylene blue. Okay. Radiographic dye. And then we take X-ray. Then we take X-rays. We don't see on the laparoscopy. Okay. This is the normal HSG. This is the normal HSG. Okay. What is it showing? This is a triangular uterine cavity. Normal uterine cavity is like this. And what is this? What are these two things? These are bilateral peritoneal spill of dye. Okay, very good. What is this? HSG. What is the diagnosis of this? Last year FNG question. Asherman syndrome. Very good. Because here there is no proper triangular formation. Okay. What is this? What is this? First image. There is a dilatation of the fallopian tube. So this is hydrosalpinx. This is hydrosalpinx. Are you able to see? Trace this fallopian tube. Okay, this is the fallopian tube. Okay, the dilatation is only at the end. The dilatation is only at the end. What is this known as? What is this known as? Tobacco pouch appearance. And in which diseases it is found? Tobacco pouch appearance. And where it is found? Genital TB. Genital TB. This is tobacco pouch appearance, means hydrosalpinx of the distal end. ठीक है, हाइड्रोसाल्पिंग जिसमें चौकोर सा हो जाए, टोबैको पाउच ऐसा ही होता है ना, चौकोर सा. ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अगर आप हम इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या है इसमें? देखिए, पहले तो यूट्रस कैविटी है, ये वाली सारी यूट्रस कैविटी है. ठीक है, ये वाली सारी यूट्रस कैविटी है और पीछे बड़ा सारा हाइड्रोसेल्पिंग्स है. दिस इज ऑल्सो हाइड्रोसेल्पिंग्स, बस दिस टाइम इट इज ऑफ होल ट्यूब. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसेल्पिंग्स? PID or genital TB? PID. That is why I told you that this hydrosalpinx is of the PID. Okay. What is this? What is this image for? Yes. Beaded appearance. It is found in beaded appearance. It is found in genital TB. Because fallopian tube is the first organ to be affected. Now let us come on Mullerian anomalies. Okay. Now this is the normal uterus. This is the normal uterus. What is this anomaly? Number one. What is this anomaly? Number one. This is very good.
Oh, what is this anomaly number 1? Uterine didulphus. How you will identify? Because the cervix and vagina are also septate. What is this anomaly? Number 2, this is unicornuate, because only one side is grown, another side is not grown. Good. What is this number 3? This number 3 is bicornuate. How you will identify bicornuate and septate? If the wall is coming inside, it is bicornuate. If the wall is normal and only some growth is coming, it is septate. Number 4 is septate. Okay. Now see, on these images we cannot say that wall is coming or not. What is this HSG of? Bicornuate or septate? Yes, very good, Akshay. What is this image of? This image is of septate. Why? Because the angle between these two is less than 60 to 75 degree. You can say less than 75 degree. If it is a small angle, it is septate uterus. Okay. We will see. What is this HSG? This is this unicornuate. Which is the most common Mullerian anomaly? The most common Mullerian anomaly is septate. What is the treatment of septate? Hysteroscopic septal resection. You are not going to mark their metroplasty. Okay. Unicornuate has the poor prognosis. Most poor prognosis. Okay. Among all the Mullerian anomalies. It is most frequently it causes abortion. Okay. What is this? This is bicornuate. What is the treatment? Meteroplasty. Now we have to dissect the uterus wall. And when you will do meteroplasty, when to do? If patient gives you history of habitual abortion. Otherwise, you are not going to do. Okay. What is this image for? Yes. This is uterine didulphus. It has a very good prognosis. No treatment required. Good. What is this image showing? Bilateral cornual block. What is the next step? If on the HSG you get bilateral cornual block, what is the next step? Come on, everybody. Next step is, yes, bilateral cornual block. What is the next step? Laparoscopy with chemoperturbation, because there is physiological spasm also occurring. Okay. What is this? Varus needle. What is the function of varus needle? To inflate the peritoneal cavity with
carbon dioxide. Okay, with carbon dioxide. What is this? This is the peritoneal spill of methylene blue dye on laparoscopy chemoperturbation. Very good. So it indicates tubes are patent or block? Tubes are patent. Very good. What is this graph? The red is for LH. Okay. Red is for LH because it is a surge. जब सडन राइज वाले जो सारे ग्राफ हैं वो LH FSH के हैं. The blue one is for FSH. Okay, the blue curve is for FSH. Okay. No, actually, sorry. The yellow one is for FSH. The blue one is for yes, estrogen, because there are slopes, 2 slopes, एक proliferative phase में, एक luteal phase में, 2 slopes हैं, तो it is estrogen. And this one is for, green one is for progesterone, because only one curve in the luteal phase. Okay, blue one is 2 curves. Okay. What is this? What does this signifies? Yes. How you will identify primordial follicle? Primordial follicle means only one layer of cell around the oocytes. This is the primordial follicle. Okay, this. What is secondary follicle? Yes, what is secondary follicle? Two layer of cells. Okay, 2 layer for the cells. Thank you, Dr. Olio, for appreciating. Okay, 2 layer of cells. Okay, this second one is secondary follicle. Okay, what is antral? If the cavity comes, you can see here the cavity has come. So this is antral follicle. Okay, this one is the mature follicle, wherever there is the biggest antrum. Mature follicle. Okay, this is the follicle which is rupturing. And what are these yellow colored structures? What are these yellow colored structure? Yes, can you write down? Corpus luteum. Corpus luteum. Okay. Now what is this? This is endometrium in the menstrual phase. Endometrium in the menstrual phase. You can see that it is very thin. This is endometrium in the menstrual phase. It is very thin. Okay. What is this? This is in the proliferative phase. This will be asked to you in the exam. Okay. Triple layer endometrium in the proliferative phase. Triple layer endometrium in the proliferative phase. What is this next? This is the secretory endometrium in the luteal phase.
See, now these whole endometrium is filled up with glands, you can see. Okay, now it is not seen clearly because it is filled up with glands. In the proliferative phase, it is not filled up with gland. That is why we see triple layer structure. Okay, okay. What is this? This is ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia. You can see that proper scrotum and testes are not there. Okay. So what will you order the test? A newborn baby delivered with ambiguous genitalia. What are the tests for the ambiguous genitalia? We did it yesterday. Come on, everybody. What you will get? The test. What? 17 hydroxy progesterone. 17 hydroxy progesterone. Okay, it is raised. And what is the disease's name? Congenital adrenal hyperplasia. Okay, congenital adrenal hyperplasia. Basically, she is a girl and she had androgen excess, so the genitalia is ambiguous. Very good. Now tell me which enzyme is deficient here? 21 hydroxylase is deficient. 21 hydroxylase is deficient. So these are the questions which have been asked, that what is deficient? 21 hydroxylase. What is the test which you will get it done? So you will get the done 17 hydroxyprogesterone get raised. Okay, 17 hydroxyprogesterone get raised. Okay, and the diagnosis is congenital adrenal hyperplasia with. What does this girl? Which is this girl? Turner syndrome. How you will identify? See, neck edema. Very good. Neck edema. And another thing, what is this? Cubitus valgus. What about the mental status? What about the mental status? Normal. They are not mentally retarded. Mentally normal. I always say, one of my friend is gynecologist. She is having Turner. Mentally normal. What is the common heart cardiac problem they have? Bicuspid aortic valve. Okay, bicuspid aortic valve. What about the height? What about the height? Height is increase or decrease? Short. Very good. Very good. Height is short. What about the breast? Absent. Okay. Last question. What about the FSH? What about the FSH? What about their karyotype? Shield chest. Yes, there is shield chest also. What about the FSH? FSH is high because there is estrogen failure. FSH is high. There is decreased estrogen because there is ovarian dysgenesis. So there is no one to give negative feedback. This is very important thing. FSH is high in ovarian and testicular failure. One question comes in every exam. Either they ask in testicular failure or they ask in the ovarian failure. Why FSH is high in the ovarian and testicular failure? Because there is decrease of estrogen in the ovarian failure. Okay, which leads to increase in the FSH. Very important thing. Okay, decrease in the estrogen,
So decrease negative feedback. Okay. Come on everybody. Primary amenorrhea patient present with this finding. Number 1. What is your diagnosis? Primary amenorrhea patient present with this finding. What is your diagnosis? Imperforate hymen. Imperforate hymen. What is the FSH here? FSH will be normal. FSH will be normal. Uterus present or absent? Uterus present or absent? Uterus is present. Very good. Cruciate incision. You have to give cruciate incision. Cruciate incision. No, estrogen is not high. Estrogen is not high, beta. It is normal. Uterus is present. Estrogen is normal. Just like pubertal girl. Estrogen is normal. What is this? Second image, transvaginal septum. How you will differentiate if image comes? By that the TVS's transvaginal septum is very deep. Very deep. Okay. Now you tell me. Yeah. Okay. Just tell me which is more common. If image is not given, which is more common? Yes. Imperforate hymen is more common. If both the options are given, an imperforate hymen is more common. Very good. What is this picture of? What is this picture of? Diagnosis? Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Okay. Now you tell me what is the bar body in the Klinefelter syndrome? How many bar bodies in Klinefelter and how many bar bodies in Turner? Yes, how many bar bodies in Klinefelter and how many bar bodies in Turner? In Klinefelter there is one bar body. No one bar body, and in Turner there is 0. In Turner there is 0. What about the FSH? What about the FSH level? Yes. What about the FSH level, beta? What about the FSH level in them? They are increased. Why? Why it is increased? Because there is testicular failure. There is testicular failure. Are their height tall or small? Is their height tall or small? They are tall. Gynecomastia present. They are very obese. When do they present to you? When do they present to doctor? When do they present to? Thank you for appreciating Dr. Janish. When to the at infertility, when their couple is not able to conceive. Okay. First image is of
First image is of, yes, chocolate cyst. Okay. It is found in endometriosis. Second image is of, second image is of, second image is of ground glass appearance. लास्ट ईयर PYQ है ये. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. किस अल्ट्रासाउंड पे क्या होता है इसमें? चॉकलेट सिस्ट. Chocolate cyst. What is the treatment of? What is the treatment of chocolate cyst? Yes. If the chocolate cyst is more than or equal to 5 centimeter, you have to do cystectomy. And if there or symptomatic, 5 centimeter नहीं भी है, symptoms हैं, तो भी कर दो. What are the symptoms? What are the symptoms? Can anybody tell me? Dysmenorrhea, dyspareunia, infertility, and menorrhagia. The most important symptom is dysmenorrhea. Okay. The third image is of peritoneal endometriosis. Okay. Peritoneal endometriosis. Okay. So there are adhesions. These, what are the name of this? One name is powder burnt. What is the another name? सब कुछ पढ़ लेते हैं फिर. Yes, very good. Dr. Manish has written gunshot. सब कुछ पढ़ लेते हैं, नाम दूसरा दे देता एग्जामिनर. Right? So they are powder burnt and gunshot. Very good. What is this image showing? First image showing salt, pepper appearance of adenomyosis. ठीक है. What are these peppers? ये peppers क्या हैं? Myometrial cyst. These are myometrial cyst or endometrium in the myometrium. Very good. Very good. What is this ultrasound? Sorry, this is MRI. What is this MRI showing of? MRI showing this? Yes, can you tell me? Typical feature of adenomyosis on MRI. Venetian blinds. बच्चे वेनिशियन ब्लाइंड्स क्या होता है? वेनिशियन ब्लाइंड्स होता क्या है? देखो, आपने कहीं देखा होगा ना, कर्टन्स ऐसे फ्लिप्स में लगे होते हैं. कर्टन्स फ्लिप्स में लगे होते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी पट्टियां लगी होती है कर्टन्स की, उनको ब्लाइंड्स बोलते हैं. तो एमआरआई ऐसी ही लगती है. ठीक है, ये छोटी छोटी पट्टियां हैं. ठीक है, इसको आप खराब इमेज नहीं बोलोगे. ठीक है, ये छोटी छोटी पट्टियां हैं, कर्टन्स हैं. ओके, वेनिशियन ब्लाइंड्स. वेरी गुड. ओके, what is this specimen? This is of adenomyosis. ये myometrial cyst है. ठीक है, adenomyosis. Okay, adenomyosis. Very good. Okay, fibroids. What is this arrow wala fibroid? What is this arrow wala fibroid? Yes. Yes, there is uterus enlargement. Very good. Okay, what is this arrow wala fibroid? Serosal. What are these fibroid? The red arrow fibroid.
इंट्राम्यूरल. व्हाट आर दीज फाइब्रॉइड? ये छुट्टू सा, स्मॉल सा, ये कौन सा है? सब म्यूकोजल. सिरोजल फाइब्रॉइड क्या करते हैं? सिरोजल फाइब्रॉइड क्या करते हैं? कैल्सिफिकेशन. They are most common to get calcified. Intramural are most common. Every fibroid is intramural in origin. Every fibroid is intramural in origin. Very good. Submucosal are the most common fibroid to cause infertility and menorrhagia. ओके ओके. तंग सबसे ज्यादा सब म्यूकोजल करते हैं. ठीक है, सबसे कॉमन इंट्राम्यूरल है. सिरोजल कैल्सिफाई हो जाते हैं. चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्यूमर? फाइब्रॉइड. दिस इज लैप्रोस्कोपिक इमेज ऑफ फाइब्रॉइड. व्हाट आर द अनदर नेम ऑफ फाइब्रॉइड? Can you tell me? What is the another name of the fibroid? Leiomyoma or myoma. What is its incidence? Incidence क्या होता है इनका? Doctor, I'm not getting you. Doctor, I'm not getting you. I will make again a PPT. Okay. This is a leiomyoma. Okay. Now just tell me ki which are the fibroid to cause retention? Which is the fibroid to cause retention? Urine retention. यूरिन रिटेंशन कौन से फाइब्रॉइड से होता है? सर्वाइकल फाइब्रॉइड. ओके, सर्वाइकल फाइब्रॉइड से यूरिन रिटेंशन होता है. व्हाट इज दिस इमेज? स्पॉट डायग्नोसिस. Yes, what is this image? Spot diagnosis. PCOS. What is the criteria? What is the criteria? Come on everybody. Rotterdam criteria. कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं. 2 प्रेजेंट होने चाहिए. पासिंग मार्क्स ज्यादा हैं इसमें. ठीक है, 2 प्रेजेंट होने चाहिए 3 में से. ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया? ओलिगोमिनोरिया और एन ओव्यूलेशन. एन ओव्यूलेशन होगी तभी ओलिगोमिनोरिया होगा. नंबर 2, हाइपर एंड्रोजिनिज्म. एक हार्मोन बताओ जो जड़ है पीसीओएस की, क्या रेज हो जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर 3 इज मोतियों की माला. मोतियों की माला. और जड़ क्या है इसकी? नो नो. नंबर 3 इज अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड में क्या बोला था मैंने? नंबर याद रखना है 10. वॉल्यूम इज मोर देन 10 एंड द फॉलिकल साइज इज लेस देन 10. नो नो, मुझे किसी ने बताया नहीं कि कौन सा हार्मोन ज्यादा जड़ है. LH. ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होता इसलिए LH बढ़ जाता है. LH जाके थीका सेल हाइपरट्रॉफी करता है. ठीक है, फिर जाके एंड्रोजन बढ़ते हैं. ओके, LH बढ़ जाता है, कभी नहीं भूलोगे आप. LH बढ़ जाता है पीसीओएस में. LH बढ़ जाता है. ठीक है, व्हाट इज दिस?
skin manifestation of इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बॉडी में हो जाता है तो उस पेशेंट में स्किन ऐसी हो जाती है. दिस इज हेयर एंड HA stands for increase एंड्रोजन. पीसीओएस में हो जाता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस इसको बोलते हैं. ठीक है, नीट पीजी में क्वेश्चन आया था ऐसे, स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. स्पॉट डायग्नोसिस ऑप्शंस में बहुत कुछ था, ये वाला टिक करना था. स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Hirsutism. Normal level of androgen, which is the hormone responsible for hirsutism. Which is the hormone responsible for hirsutism? Androgen, hyperandrogen. Normal pubic hairs के लिए भी hyperandrogen. What is the normal androgen level in female? मेल्स का मत बता देना, फीमेल्स का बताना है. 20 to 70. पीसीओएस में कितना हो जाता है? ये पेशेंट पीसीओएस का है. पीसीओएस में हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो जाता है. मैक्सिमम कितना होता है? LH इंक्रीज इन LH कॉजेज हाइपर एंड्रोजेनिज्म. मैक्सिमम कितना होता है? 150 maximum. it doubles. अगर मोर देन 150 है टेस्टोस्टेरोन तो डायग्नोसिस, if testosterone is more than 50, diagnosis adrenal tumor. Good. What is this image? OHSS. Which is the biochemical responsible for OHSS? Yes, which is the biochemical responsible for OHSS? Vasculoendothelial growth factor. What does vasculoendothelial growth factor does? सारा इंट्रावस्कुलर एक्स्ट्रावस्कुलर में फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावस्कुलर गोज इनटू एक्स्ट्रावस्कुलर. ठीक है, तो इंट्रावस्कुलरली क्या हो जाता है? हाइपर कोएगुलेशन. और एक्स्ट्रावस्कुलरली क्या हो जाता है? असाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन. ट्रीटमेंट क्या है? आईवी फ्लूइड्स देंगे तो इंट्रावस्कुलर का हाइपरकोगुलेशन ठीक हो जाएगा ना. प्लस एसाइटिक टैप, पानी पिलाते रहो, पानी निकालते रहो, क्योंकि हुआ ही यही है ना, पानी इंट्रावस्कुलर से एक्स्ट्रावस्कुलर में गया है, तो इंट्रावस्कुलर में पानी देंगे तो पानी पिलाते रहो, पानी निकालते रहो. कॉन्ट्रासेप्शन ये आ गया है. इसमें कौन सा केमिकल है? Name the chemical which is present here. Nonoxynol 9. Okay. What is the trade name of female condom? Yes, Femidom. ठीक है, Femidom. What is this which I have drawn? This is diaphragm, sponge or cervical cap. What is the गवर्नमेंट सप्लाई में क्या मिलता है फ्री?
मेल कॉन्डम को क्या बोलते हैं? निरोध, निरोध, ठीक है। दिस इज डायफ्राम। सर्वाइकल कैप कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज फेलोप रिंग applicator, okay, used in tubectomy. नीट पीजी में जब क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने क्या पूछा था? ऑप्शन में था स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो फेलोप रिंग इज अ लेप्रोस्कोपिक मेथड और मिनी लैप? फेलोप रिंग, ये जो गोल गोल होता है, दीज आर ऑलवेज लेप्रोस्कोपिक, ओके, लेप्रोस्कोपिक ring fellow used in the tubectomy. Which part is non ligation? आप सबने सही किया था आज क्विज में, isthmus. Okay, what is this procedure? What is this procedure? mini lap, mini lap, ठीक है। प्रोसीजर का नाम बताएंगे, प्रोसीजर का नाम बताएंगे। मॉडिफाइड पोमरॉय, मॉडिफाइड पोमरॉय, ओके, मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर, ओके। ये फोर्सेप का नाम क्या है? इस फोर्सेप का नाम क्या है जिससे पकड़ा हुआ है फॉलोपियन ट्यूब को? बैबकॉक्स, बैबकॉक्स, ठीक है। चलिए, ट्यूब इज ऑलवेज होल्डेड विद बैबकॉक्स, ओके। व्हाट इज दिस? कॉपर्टी है, कॉपर्टी का नाम बताएंगे। ए का मतलब है कि कॉपर इज ऑन द आर्म्स। व्हाट इज दिस? यस, व्हाट इज दिस? दिस इज गाइनीफिक्स। What is Gynefix? Gynefix is frameless, frameless intrauterine device. Frameless intrauterine device. This is 4th generation. ठीक है, इसके अंदर टी नहीं बना होता, ठीक है, इसे कॉपर टी नहीं बोल सकते। ये बिना टी के इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। इट इज 4th जनरेशन। दिस इज मैरिना। कौन सा इसके अंदर होता है? विच ड्रग इट कंटेन्स? लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ओके। एंड दिस इज 3rd generation. This is simple copper tea, okay. What is the first speculum? First speculum क्या है? Only 5-6 images are left. What is the first speculum name? Cuscos. Cuscos. In the obstetric imaging, we will do the same speculum. What is the advantage of it? ये screws किसके लिए हैं? The screws, why are the screws present? Because it is self-retaining, so that it can be self-retaining. What is this? ध्यान से देखना, कोई स्ट्रक्चर पड़ा है। एयर स्पेचुला, बोलने की जरूरत नहीं है ना, पैप्समियर करते हैं। व्हाट इज दिस? वेरी गुड। व्हाट इज दिस?
कॉपलेंस जार, एयर स्पेचुला से सेल्स को स्लाइड पे लगाते हैं और फिर उस स्लाइड को कॉपलेंस जार में रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, कॉपलेंस जार. ओके, व्हाट इज द फिक्सेटिव? फिक्सेटिव क्या होता है? 95% इथेनॉल. ओके, एयर ड्राई नहीं करते. व्हाट इज दिस? सर्विक्स ग्रोथ. अगर ये वाली कभी आपको पिक्चर दिखती है, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? What is your next step? पंच बायोप्सी. सर्विक्स ग्रोथ जब होती है तो नेक्स्ट स्टेप पंच बायोप्सी होता है, बिकॉज ग्रोथ इज अ साइन ऑफ सीए सर्विक्स. ओके ओके, व्हाट इज दिस? सर्विक्स ग्रोथ बेटा, सर्विक्स ग्रोथ बेटा, it is CA cervix. Dr. Manish, it is CA cervix. Okay? Okay. What is this? What is this? Colposcope. Okay? Colposcope. Right? When it is done, when colposcopy is done. Yes? If suspicious pap smear or post coital bleeding present and no lesion on cervix, and no not done in PID. This is colposcope. Okay, colposcopy is done to find the lesion. Okay, colposcopy is done to find the lesion. Okay, and when we will do, if on the pap smear there is suspicious, there is CIN or CN2, and patient comes to you with post coital bleeding and there is no lesion. Okay, right? Now tell me, what are the 4 steps of colposcopy? Tell me. मैग्निफिकेशन इमेज, यू हैव टू टेक द, इसी के अंदर ना मैग्नीफायर होता है, यू हैव टू टेक द मैग्निफिकेशन इमेज. नंबर 1 यू हैव, नंबर 2 यू हैव टू अप्लाई शिलर्स आयोडीन. ठीक है, अगर कैंसर है तो कैंसर साइट्स विल बी, डिस्प्लेजिया साइट्स विल बी. Okay, done, Dr. Shilpa. Done. Number 3 is, if I forget then make me remind. Visual. Number 3 is application of acetic acid. Okay. Number 4 is green filter. Green filter. Question आया था ना, FMG में question was there. Which filter is done in colposcopy? Right? Dysplasia sites are known as, dysplasia sites को क्या बोलते हैं? Dysplasia sites को क्या बोलते हैं? They are brown in color or yellow in color? Yellow in color.
Dysplasia sites are white on application of acetic acid. Dysplasia sites shows white colored blood vessels. ठीक है, very important. What is this? What is this? Okay, done, doctor. Done. We will discuss the tocolytics also. What is this? Piple? No. This is piple. बिल्कुल आपके रिफिल की तरह होता है. Okay, this is piple endometrial aspirator. Dr. Manish, you are asking about colposcope or you are asking about this one instrument? Okay, piplus endometrial. This is used for done office. This is used for doing office biopsy. Okay, this is used for doing office endometrial biopsy. Which is the best? Okay, done, Dr. Rahul. Done. Colposcope. Okay. Which is the best here? Which is the best endometrial biopsy procedure? Which is the best endometrial biopsy procedure? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ये. Hysteroscopic. Okay. What is this? What is this? Yes, please. This. What is this near uterus? FNG का PYQ है. FNG का PYQ है. Structure near uterus is. No, this is not candidiasis. This is a laparoscopic image, beta. This is uterus. What is this? You are taking it as vagina. This is uterus. What is this? व्हाइट कलर का है. सही पहचाना है. व्हाइट कलर का है. लेप्रोस्कोपिक इमेज में यूट्रस के पास व्हाइट कलर का क्या होता है? यस, ovary. This is enlarged ovary. Ovary is enlarged. Okay, ठीक है. Ovary is enlarged. अब बताएंगे when is ovary enlarged. अगर हिस्ट्री ऑफ हिर्स्यूटिज्म है तो देन दिस इज अ केस ऑफ यस PCOS. ठीक है. अगर हिस्ट्री ऑफ असाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो दिस इज अ केस ऑफ मीक सिंड्रोम. डू यू गॉट इट?
What is this? What is this? What is the another name of this? What is the another name of this? Yes. Benign ovarian tumor. Okay. Benign ovarian tumor. Benign teratoma. Benign teratoma. Okay. What is this? What is this? Type. In which type it is? In which type it is? Yes. Germ cell tumor. It is not epithelial tumor. It is germ cell tumor. Okay. 3 germ cell layer प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. हाल ही में एक डेंटिस्ट को हुआ था ये ट्यूमर, उसमें पूरा बच्चा भी पाया गया. ओके. 3 germ cell products are found. Okay. What is the first histopath finding? Yes, what is the first histopath finding? Will you help me? These all are the findings of ovarian tumor. What is the first histopath finding? Schiller-Duval bodies. These are found in endodermal sinus और यॉर्क सैक ट्यूमर. ठीक है. एस से शिलर डुवेल्स, ध्यान से देखेंगे. एस से शिलर डुवेल्स. एंडोडर्मल साइनस के लास्ट में भी एस है, यॉर्क सैक के लास्ट में भी एस है. ठीक है. फर्स्ट वाला नहीं मिलता, बाकी सारा मिलता है. ठीक है. अब इसको पिक्चर में कैसे पहचानेंगे? ठीक है. देखो ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है बच्चे. देखो ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है. ठीक है. अगर कलेक्शन ऑफ सेल्स के बाहर खाली स्पेस है, ये देख रहे हो आप, बाहर खाली स्पेस है या साइनस बाहर है, तो वो एंडोडर्मल साइनस का ट्यूमर है. ठीक है. उसको बोलते हैं शिलर डुवेल्स बॉडी. व्हाट इज द सेकेंड वन? This second one is dysgerminoma. Dysgerminoma. Why? Because there are septas. ये देखेंगे आप, ये septas है. और ब्लू कलर के सेल्स है ना. What are these ब्लू कलर के सेल्स? डिसजर्मिनोमा में क्या होता है? सेप्टा प्लस लिम्फोसाइट्स. Septa plus lymphocyte. What is this third type of tumor? What is this third type of tumor? Yes, this is granulosa cell tumor. कैसे पहचाना? वो जो खाली स्पेस हमने देखी थी वो इनके सेंटर में होती है. वो इनके सेंटर में होती है. कलेक्शन ऑफ सेल्स देखो और देखो खाली स्पेस किधर है. ठीक है. कलेक्शन ऑफ सेल्स देखो और देखो खाली स्पेस किधर है. सेंटर में है तो कॉल एक्सनर बॉडीज. ठीक है. सेंटर में है तो कॉल एक्सनर, सी फॉर सेंटर, कॉल एक्सनर बॉडीज. ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर में मिलता है.
इसको फ्लोरल बॉडीज भी बोलते हैं। फूलों में भी अंदर नीचे अंदर स्पेस होता है ना, फ्लोरल बॉडीज। ओके, चलिए, ये हिस्टोपैथ फाइंडिंग थी ओवेरियन ट्यूमर्स की। बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आपके भी आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट सेल इज, व्हाट इज दिस फर्स्ट पिक्चर ऑफ? चलिए चलिए जल्दी बताइए, फर्स्ट पिक्चर किसकी है? नो, नो, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्लू सेल। किसमें मिलता है? यस, किसमें मिलता है? गार्डेनेला वेजाइनालिस, ठीक है, गार्डेनेला वेजाइनालिस और बीवी, ठीक है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ओके, व्हाट आर क्लू सेल्स? क्लू सेल्स इज एमसिल क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ठीक है। व्हाट इज एमसिल क्राइटेरिया? एमसिल क्राइटेरिया क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज एमसिल क्राइटेरिया? 4 पॉइंट्स हैं, 4 में से जो है 3 होने चाहिए। व्हाट इज एमसिल क्राइटेरिया? पीएच कितना होना चाहिए? मोर देन 4.5। pH should be more than alkaline, Dr. Shilpa. More than 4.5. What else? Whiff test positive. Whiff test positive. Then clue cells. One is left. One is left. Yes, grayish discharge. Grayish और क्रीमिश डिस्चार्ज, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, गार्डेनेला में, गार्डेनेला जो है बिल्कुल भी प्रूराइटिस नहीं करता, तो इसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता है प्रूराइटिस, सॉरी, फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज से, ठीक है। इसीलिए सिर्फ इसी के लिए, नो नो डॉक्टर मनीष, नॉट फिशी ऑर्डर, नो, ठीक है। तो गार्डेनेला जो है बिल्कुल भी प्रूराइटिस नहीं करता, ठीक है। गार्डेनेला को इसलिए क्योंकि ये प्रूराइटिस नहीं करता, तो पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता, पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता तो ये मल्टीप्लाई करता रहता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म जितना मल्टीप्लाई करता है ना बेटा, उतनी ज्यादा स्मेल आती है। इसीलिए इसका टिपिकल करेक्टरिस्टिक है फाउल स्मेल, फाउल स्मेल, ठीक है। फाउल स्मेल आती है, ठीक है। पेशेंट जब आता है बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा उतना ही ज्यादा डीएनए आरएनए बनेगा, है ना। आप सब तो अच्छे बच्चे हो, आपको पता है, और उतनी ही ज्यादा डीएनए आरएनए की स्मेल आती है, ठीक है। फाउल स्मेल, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या करते हैं विफ टेस्ट में? नंबर 2, दिस इज फाइंड इन एल्केलाइन पीएच, क्योंकि एसिडिक पीएच में तो लैक्टोबैसिलस इंक्रीज हो जाता है, एसिडिक पीएच में तो लैक्टोबैसिलस इंक्रीज हो जाता है। तो एसिडिक पीएच में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? एसिडिक पीएच में कौन सा इन्फेक्शन होता है? बाकी सारे इन्फेक्शन एल्केलाइन पीएच में होते हैं, एसिडिक पीएच में कौन सा इन्फेक्शन होता है? कैंडिडा, कैंडिडा, ओके। बाकी सारे इन्फेक्शंस शिल्पा बच्चे एल्केलाइन पीएच में होते हैं, ठीक है। तो हम विफ टेस्ट में क्या करते हैं? इस सर्वाइकल सेल्स को, सर्वाइकल सेल्स को हम, ये जो वेजाइना के हमने स्मीयर लिए हैं, इनमें KOH दे देते हैं, उसको और एल्केलाइन कर देते हैं, और फिर बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है। बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, उसको बोलते हैं विफ टेस्ट। उस एल्केलाइन मीडिया को और एल्केलाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसको, इसी के लिए इसका क्राइटेरिया है, क्योंकि ये इचिंग नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्लू सेल्स हैं। व्हाट आर क्लू सेल्स?
बता सकते हो? ये बेसिकली वेजाइना का सेल है, और ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर्स है ना, ये है आपके गार्डेनेला वेजाइनलिस। दीज आर गार्डेनेला वेजाइनलिस। ये उसके बॉर्डर पे जाके चिपक जाते हैं। देखो, देखो ये बॉर्डर पे चिपके हुए हैं। क्लू सेल्स का मतलब क्या है? वेजाइना के सेल्स के बॉर्डर के ऊपर चिपके हुए गार्डेनेला वेजाइनलिस। ठीक है। नंबर फोर्थ क्या है इसका? इसका ग्रेइश कलर का डिस्चार्ज। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, एमसेल क्राइटेरिया बनाया इसके लिए है क्योंकि इसमें प्रोराइटिस नहीं होती। व्हाट इज सेकेंड पिक्चर? वेजेनाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बेटा। कैसे भी करके सब कुछ याद कर लो अब। ठीक है, वेजेनाइटिस क्या होता है? ये कौन सा वेजिनाइटिस है? नंबर सेकंड वाला। यस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ठीक है, इसके पास अपनी एक गाड़ी होती है, ये फ्लैजिला होता है। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। ठीक है, ये प्रोराइटिस करता है। यस, इसीलिए इसका क्राइटेरिया नहीं है। पेशेंट फटाफट सिम्टम। इसका डिस्चार्ज कैसा होता है? इसका डिस्चार्ज कैसा होता है? कम ऑन। यस, वेरी गुड। इसका डिस्चार्ज कैसा होता है? यस, इसका डिस्चार्ज कैसा होता है बेटा? येलो ग्रीन। येलो ग्रीन। देखो, अब फिर से समझेंगे, कहीं हम एग्जाम में भूल ना जाएं। जो भी चीज इन्फ्लामेशन करती है, ठीक है, जो भी चीज इन्फ्लामेशन करती है, इसका मतलब है, यानी जो भी चीज प्रोराइटिस कर रही है, वो उतना ही ज्यादा जो है ऑक्सीडाइज होगी। है ना? हम लोग भी जब गुस्सा होते हैं लाल पीले हो जाते हैं ना। ठीक है, अब ये जो है, ये ऑर्गेनिज्म भी बड़ा गुस्से वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए इसका डिस्चार्ज, ये इन्फ्लामेशन बहुत करता है, साइटोकाइंस बड़े रिलीज करता है। इसीलिए इसका येलो ग्रीन के साथ फ्रॉदी वर्ड नहीं भूलना है आपने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए इसके अंदर स्ट्रॉबेरी वेजाइना क्यों होता है? क्योंकि इसके पास ना फ्लैजिला है। एक जगह यहां इन्फ्लामेशन करके सर्विक्स पे, फिर यहां चला जाता है, फिर यहां चला जाता है, फिर यहां चला जाता है, क्योंकि इसके पास अपनी गाड़ी है। ठीक है, एक जगह बाइट करके दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी चौथी ऐसे चला जाता है। ठीक है, ओके। दिस इज कैंडिडा। ये क्या है? हाइफे। ये क्या है? हाइफे है। ओके, एंड कैंडिडा का प्रोराइटिस होता है। कैंडिडा में प्रोराइटिस होता है। यस, बहुत ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा प्रोराइटिस कैंडिडा में होता है। ठीक है, इसका डिस्चार्ज आप सब लोगों को पता है। आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताओ। 1 2 3 4। यस, number 1 causative organism is ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। अब डीप में नहीं जाएंगे, पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर 2 इज, नंबर 4 इज कैंडिडा। गुड गुड, कैंडिडा, कैंडिडा। नंबर 2 इज, बेटा ये डिस्चार्ज है, गलत लेबल हो गया, दिस वन इज डिस्चार्ज। नंबर 2 एंड नंबर 3 इज, कम ऑन एवरीबॉडी, इसमें से नॉर्मल कुछ भी नहीं है।
Everything is subnormal. Yes, number 2 is Trichomonas vaginalis. बड़ा गुस्से वाला ऑर्गेनिज्म है, तिकड़मी है. Yellowish green frothy. Yellowish green frothy. Okay. Number 3 is, एक ही बच गया, अब तो बता दो नंबर 3. गुड गुड, बैक्टीरियल वेजिनोसिस. देखो कितना पिंकी पिंकी है ना वेजाइना, पिंकी पिंकी है ना वेजाइना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. चलिए, वेजिनाइटिस के लिए कौन से किट है एंड पीआईडी के लिए कौन सी किट है? चलिए चलिए बताइए. वेजिनाइटिस के लिए ग्रीन किट है. नंबर बताएंगे? इन पे दिख नहीं रहा है. ग्रीन किट का नंबर क्या होता है? नो नो, ग्रीन किट का नंबर क्या होता है बेटा? किट नंबर 2. ठीक है. पीआईडी के लिए इट इज येलो किट. येलो किट, किट नंबर 6. ओके, हमने 2 ही पढ़नी है. ठीक है. ओके, हमने 2 ही पढ़नी है. 2 6, 2 6. ठीक है. वेजिनाइटिस के लिए 2 नंबर. ठीक है. ठीक है. पीआईडी के लिए येलो किट. ओके. वेजिनाइटिस छोटी बीमारी है, इसलिए छोटा नंबर, कलर भी ग्रीन है. ठीक है, ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है. पीआईडी बड़ी बीमारी है. ठीक है, पीआईडी बड़ी बीमारी है. अब थोड़ा येलो अलर्ट हो जाओ. ठीक है, मरता तो किसी में भी नहीं है. ठीक है, तो बड़ा नंबर. पीआईडी में 6 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से? वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, पेरिटोनियम. ठीक है. ओके. ठीक है, पीआईडी में अलर्ट हो जाना है. वेजिनाइटिस में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ग्रीन रहने का, कीप गोइंग. ठीक है, छोटी मोटी बीमारी है, ठीक हो जाएगी. चलिए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. एज ऑफ द फीमेल इज 60 years, पैरा 3, लाइट 3. डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. This is prolapse. Okay, prolapse uterus. Treatment is ward mayo. Ward mayo, which is vaginal hysterectomy plus anterior colporrhaphy plus posterior colpoperineorrhaphy. गुड. चलिए चलिए, थोड़ी सी रह गई इमेजेस, 2 3. ठीक है. नंबर 1 फिस्टुला इज, नंबर 2 इज, नंबर 3 इज, नंबर 4 इज. चलिए बताइए. वेरी गुड, गुड गुड. Doctor sir, we will discuss it today after the session. Only 2 images are left.
ओके कौन सा प्रोसीजर किस में करते हैं, वी विल डिस्कस इट. नंबर वन फिस्टुला इज यूट्रस. यूट्रस और ब्लैडर में है. यूट्रो वेजाइकल. ठीक है. नंबर टू इज वीवीएफ वेजाइको वेजाइनल. ठीक है. बस देखना है कौन सा स्ट्रक्चर क्या है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व. नंबर थ्री इज यूरिथ्रोवेजाइनल. Urethrovaginal. Good. Okay. Number four is rectovaginal. Good. What is the cause of VVF in India? What is the cause of VVF in India? Most common cause of VVF in India. Obstructed labor. Okay. Obstructed labor. Right? What is the test? What is the test to diagnose it? 3 swab test. Investigation of choice is 3 swab test. Okay. When to repair? When to repair? After 3 months. After 3 months. Okay. Okay. Let's study this. What is this? Pessary. What is the indication of pessary? PYQ FNG June 22. प्रोलैप्स में डालते हैं पैसरी. यस. व्हाट इज द इंडिकेशन? इन एमरजेंसी. नंबर वन. नंबर टू. यस. नंबर टू. नंबर टू. इन द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में ऑपरेट नहीं कर सकते. पोस्टपार्टम. पोस्टपार्टम सर्जरी नहीं कर सकते. ठीक है. एंड नंबर फोर. बेटा दीज आर पैसरीज. या. नंबर फोर. Patient not fit for surgery. Patient not fit for surgery. एनेस्थीसिया वाले ऑपरेट नहीं करने दे रहे. पेशेंट नॉट फिट फॉर सर्जरी. ओके. ठीक है. रात को ये वाला PYQ था FMG का. रात को पेशेंट आया है प्रोलैप्स के साथ. कोई इमरजेंसी नहीं है. इमरजेंसी इन द सेंस कोई हरी नहीं है ऑपरेट करने की. तो तब तक पैसरी डाल दो. ठीक है. यूरिन रिटेंशन हो जाता है. पैसरी से यूरिन निकल जाता है. ठीक है. प्रेगनेंसी में ऑपरेट कर नहीं सकते तो अर्ली 20 वीक्स तक पैसरी डाल सकते हो. यूट्रस नीचे नहीं आता. कंफर्टेबल रहती है फीमेल की लाइफ. पोस्टपार्टम 6 मंथ्स तक ऑपरेट नहीं कर सकते. तब तक फिर फीमेल का यूट्रस नीचे थोड़ा ना लटकता रहेगा. पैसरी डाल दो. 60 ईयर्स 70 ईयर्स की एज में बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हो जाती हैं. ठीक है. उस कंडीशन में भी पैसरी डाल दो. व्हाट इज दिस सर्जरी? दिस प्रोसीजर. व्हाट लास्ट स्लाइड है बच्चे ये. व्हाट इज दिस प्रोसीजर?
TOT, ट्रांस ऑब्ट्यूरेटर टेप, किसमें करते हैं? यस, किसमें करते हैं बच्चा? इन SUI, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे यूरिथ्रा लिखा हुआ है। यूरिथ्रा इसका स्टेबल नहीं था, इधर उधर डोल रहा था, उसको यूरिन उसका लीक हो जाता था खांसी करने पे, तो यूरिथ्रा को पकड़ के सपोर्ट कर दिया टेप से। ट्रांस ऑब्ट्यूरेटर टेप, पूरा नाम लिखे, ट्रांस ऑब्ट्यूरेटर टेप। ठीक है, पहले इस स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए ब्रुच कॉल्पो सस्पेंशन करते थे, ब्रुच कॉल्पो सस्पेंशन करते थे, लेकिन अब ये ओपीडी प्रोसीजर है एंड दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके, इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दिस इज फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, दिस इज डन फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। दिस इज ट्रांस ऑब्ट्यूरेटर टेप। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, चलिए अब आप बताइए आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑल द इमेजेस आर डन, आप बताइए क्या क्या करना है। रैपिड रिवीजन, ओके, फटाफट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, फटाफट करते हैं। व्हाट इज दिस? बार्थोलिन सिस्ट, दिस इज बार्थोलिन सिस्ट। it opens inner to labia minora, treatment marsupialization. What is this? Interior branch of internal iliac artery. ठीक है, इट इज लाइगेटेड, ये लाइगेशन कर रहे हैं, एक धागे से बांध रहे हैं, इट इज लाइगेटेड इन PPH। ओके, व्हाट इज दिस? ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर क्या है ये? दिस वाला लिवेटेड एनाई। ठीक है, इसने यूट्रस को पकड़ा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये यूट्रस के यूं चारों तरफ इसने घेरा बनाया हुआ है। दिस इज हिस्टेरोस्कोपिक इमेज ऑफ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। इसको हम हिस्टेरोस्कोपिक माइमेक्टमी करते हैं, इसकी हम हिस्टेरोस्कोपिक माइमेक्टमी करते हैं। ओके, दिस इज एशियरमैन सिंड्रोम, इसमें इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल में एडहेशंस हैं, दैट इज वाई इसकी ऐसी इमेज है हिस्टेरोस्कोपी पे। एंड इसका इटियोलॉजी DNC होता है, विग्रस DNC जब करते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और पेशेंट प्रेजेंट टू अस इज एमिनोरिया एंड समटाइम पेशेंट प्रेजेंट टू अस इज हाइपोमिनोरिया। इन सब पे क्वेश्चन आ गया है। FSH इज नॉर्मल, ठीक है, FSH इज नॉर्मल, इस पे भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एशरमैन पे नहीं आया है, इस बार एक्सपेक्टेड है। हिस्टेरोस्कोपिक एडिसियोलाइसिस, एडिशंस को तोड़ दो, इंक्रीज ईस्ट्रोजन एंड इंट्रायूट्राइन पीडियाट्रिक कैथेटर। चलिए, दिस इज लीच विल्किंसन कैन्यूला, इट इज डन टू यूज टू डू HSG, which is the investigation of choice for tubal patency। इसको, ये स्क्रू वाला एंड जो है ये सर्विक्स में जाता है। ठीक है, स्क्रू वाला एंड जो है सर्विक्स में जाता है और पीछे से हम रेडियोग्राफिक डाई डालते हैं। दिस इज द नॉर्मल HSG। द नॉर्मल यूट्रस शेप ऑन HSG इज ट्रायंगुलर एंड दीज आर द फ्री पेरिटोनियल स्पिल्स, ओके, ऑफ बोथ द ट्यूब्स। This is the HSG of Escherman syndrome. This we have already discussed. Okay. This is hydrosalpinx, bacha. And this is the tobacco pouch appearance. And this is seen in tobacco pouch appearance. Tobacco pouch appearance is seen in genital TB. This is the hydrosalpinx of the whole fallopian tube. ठीक है, मैंने पहले भी कहा था ये यूट्रस ये है,
ये पीछे पूरा साल्पिंक्स है, हाइड्रोसेल्पिंक्स, एंड दिस इज द हाइड्रोसेल्पिंक्स ऑफ पीआईडी. दिस इज द beaded appearance. This is the beaded appearance of the fallopian tube. Again, this is seen in the genital TB. Okay, these are the Mullerian anomalies. This is the normal uterus. Okay, this is uterine diadelphus, क्योंकि यूट्रस की वॉल नीचे अपर वेजाइना तक जा रही है. This is unicornuate. Number 2, this is unicornuate, and because one side of the Mullerian duct is not grown, that is why. This is bicornuate because uterus wall is going between the two cavities. This is septate because uterus wall myometrium is normal, a growth is going in between. ठीक है. This is septate uterus because the angle is less than 75 degree. Angle between the two endometrial cavities is less than 75 degree. This is the most common Mullerian anomaly that occurs, and its treatment is hysteroscopic septal resection. Okay, this is unicornuate uterus, and it has the most poor prognosis, and it is the most frequent to cause recurrent pregnancy losses. Okay, this is the bicornuate uterus, and the treatment of bicornuate uterus is meteroplasty. The angle between the two endometrial cavity is more than 75 degree. Now it is meteroplasty is to be done only when there is habitual abortion. Okay, now this is the uterus diadelphus. Okay, uterus diadelphus क्यों है? Because we can see that here the cervix and vagina are two. ठीक है, so that is why it is the uterus diadelphus, and the angle it has a very good prognosis, and usually no treatment is required. Okay, next is this is bilateral cornual block. If this type of HSG image comes on the HSG, this type of imaging comes on HSG, next step is, yes, can anybody tell me? Next step, laparoscopy with chemopertubation, because this can be also physiological due to the pain. This is Veress needle used in the laparoscopy to inflate the peritoneal cavity with carbon dioxide. This is the laparoscopic chemopertubation, and this is done due to the methylene blue with the methylene blue dye, and the peritoneal spill is being watched. This is the 4 graphs. LH, FSH graphs are one with surge. This is the LH graph which has a bigger surge. This is the FSH graph which has a smaller surge. This is the estrogen graph which has 2 slopes, one in the proliferative phase and one in the luteal phase. This is the progesterone graph. Okay, and this is the progesterone graph, and usually this is done in, yes, in the luteal phase. This is a progesterone curve. Okay, okay, next is the ovarian follicle. Dr. Shilpa, are you there? I will then revise it. Are you there? Dr. Shilpa, are you there? आई थिंक शी विल वॉच लेटर. जल्दी से समझेंगे, ठीक है. प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल इज ऐसे एक लेयर ऑफ सेल्स बाहर और अंदर ऊसाइट. दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, प्राइमोडियल
follicle when only one layer of cell is outside. Okay. And what is secondary follicles? When two layer of cells are outside, it is secondary follicle, and between it is oocyte. This is secondary follicle. Okay. They are labeled wrong in the diagram. जब एक कैविटी आ जाती है, वाटर फिल्ड कैविटी आ जाती है, तब इसी फॉलिकल को एंट्रल फॉलिकल कहते हैं. ठीक है. जब एक बड़ा सा एंट्रम बन जाता है, बहुत ही बड़ा सा, पूरा ऐसे भर जाता है, उसको मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. और येलो कलर की सारी बॉडीज जो है वो कॉपर्स ल्यूटियम होती हैं. ओके. द फर्स्ट figure here is the endometrium of the menstrual phase. You can see this beach wala is the endometrium, this one. ठीक है. And it is very thin. So this is the menstrual phase. Menstrual phase में बहुत thin होती है. जब ट्रिपल लेयर हो जाता है तो then it is of the proliferative layer. Okay. Proliferative phase बहुत ज़्यादा हो जाती है. And this hazy thick endometrium is of the secretory phase. Okay. अब ये endometrium is full of secretions. This is the picture of a girl which is who is having the ambiguous genitalia, because you can see there are two partition of penis, and scrotum is not having the testes. Okay. So there is increase in 17. What is increased? To diagnose this condition, 17-hydroxyprogesterone should be increased. And what is the deficiency? 21-hydroxylase deficiency. Okay. This is a girl with Turner syndrome. Height is decreased in this girl. Breast is absent, almost absent. The features which will help you to diagnose is the cubitus valgus and the neck edema. Mentally, they are normal. The heart problems which they have is bicuspid aortic valve. Okay. The karyotype is XO. Bar bodies are absent. And very important, FSH is high. Their ovaries are not functioning. So estrogen is decreased and FSH is high. Very good. This is the image of imperforate hymen. FSH is normal here. Cruciate incision is to be given. This is the image of transvaginal septum. In both the cases, breast is normal and uterus is present, and there is primary amenorrhea. This is the image of Klinefelter syndrome. There are the karyotype is XXY. So 1X is extra. So there is one bar body, and there is testicular failure, which leads to increase in the FSH. Okay. And in addition to that, there is gynecomastia and central obesity. The first picture is of the chocolate cyst, and the second picture is of the ground glass appearance of the chocolate cyst on the ultrasound, and the last picture is of the powder burnt appearance, or you can say gunshot appearance of the peritoneal endometriosis. These are all the adenomyosis picture. First picture is a salt and pepper appearance. Second picture is of the MRI of the adenomyosis showing the Venetian blinds. And the third is a specimen of the adenomyosis in which there are myometrial cysts. Okay. The arrow wala is serosal, and this wala is intramural, and this chotu sa is submucosal. Serosal are most common to calcify. The intramural is most common on fibroid. All the fibroids are intramural in origin, and submucosal are the fibroids which cause infertility and menorrhagia. Urine retention is most commonly seen in cervical fibroid. These both are the pictures of fibroid. Fibroid has a very high incidence, 60 to 80%, and the another name of fibroid is leiomyoma and myoma. Okay. Now this is the ultrasound appearance of the PCOS. It is pearl, ring of pearls or necklace appearance. Rotterdam criteria is used to diagnose. This is a picture of Acanthosis nigricans,
and this is a Heron syndrome, and this is a picture of hirsutism. Ferman-Galvis scoring is done to diagnose it. This is a picture of OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome. This is a barrier contraceptive at the spermicidal jelly, which is used as nanoxynol 9. This is the Fallop ring applicator, and it is used for tubectomy to apply the ring with the laparoscopy. This is the modified Pamarite technique, which is done in mini lab. Okay, and the forceps which holds the fallopian tube is the forceps which holds the fallopian tube is the Babcock's forceps. Modified Pomeroy is the most common procedure which is done. Okay. The number one is Copperty 380A. Okay. And the another is the Gynefix. This is the 4th generation Copperty, and rather it is a frameless Copperty, right? And this is the Marina, and the this is a simple Copperty. Okay. Number one is the colposcope. Number 2 is the air spatula, by which we take pap smear. Number 3 is the Coplin jar, in which we put the slide. Okay, this is a cervical growth, or you can say CA cervix. And if such a growth we see on the per speculum examination, then we have to take the punch biopsy. This is the colposcope. Okay, and it is to be done, colposcopy is to be done if we have any suspicion of the pap smear. Dr. Manish, are you there? Dr. Manish, are you there? Should I explain this in detail? Firstly, we magnify the cervix. We see a magnified image. So it is quite possible the images which we are not seeing on the normal eye, we can see it on magnification. Okay. So it is quite possible to see the cervix lesion on magnification. Schiller's iodine, we apply brown color iodine, and if it is a dysplasia is present, then the area is, if the dysplasia is present, then it is the yellow color area. Okay, because if whenever there is dysplasia, there is decreased glucose. Okay, if the dysplasia is present in the cervix and we apply acetic acid, then dysplasia area changes to white, because in the dysplasia area there is, because in the dysplasia area there is lot of DNA and RNA. Okay, whenever we use green filter or on the cervix, then the blood vessels are seen as white. The blood vessels are seen as white. Blood vessels are seen as white. Therefore, the
Therefore, every dysplasia area has vascularization. Okay, this is the Peoples forceps. This is used for endometrial biopsy, office endometrial biopsy, in the patients which have menometorrhagia or postmenopausal bleeding. This is the enlarged ovary. Enlarged ovary is seen in PCOS and in the ovarian tumor. As per the history, we will make the diagnosis. Okay. This is the dermoid cyst. Okay. Dermoid cyst is seen in the teratoma. It is a benign ovarian teratoma, right? And it is a subtype of germ cell tumor. It is diagnosed on the ultrasound with the help of the it is diagnosed on the ultrasound when we see the three germ cell layer products. Okay, these three are the histopath images of the ovarian tumor. First is the Schiller dual bodies. Here the empty space is present outside the uterus. Second is the dysgerminoma. Okay, here the septas are present along with lymphocytes. Third is the Kohl-Eigner bodies, which is seen in granulosa cell tumor. Here the empty space is present in between. This is the first one is the clue cells, okay, which is found in Gardnerella vaginalis. Second one is the Trichomonas vaginalis picture seen on the vaginal sphere. The third one is the Candida. Okay. Now this is the first image is the strawberry cervix. Okay. Second is the yellowish green discharge of Trichomonas vaginalis. Strawberry cervix is also found in the Trichomonas vaginalis. Fourth is the Candida curdy white discharge. Third is the bacterial vaginosis. Okay. Second kit or the green kit is for vaginitis, and sixth kit or the yellow kit is for PID. This is the prolapse uterus, and ward Mayo is the treatment for it. What is ward Mayo procedure? It is vaginal hysterectomy along with interior colporrhaphy plus posterior colpoperineorrhaphy. The first fistula is the uretrovaginal uterus and bladder utrovesical fistula. The second fistula is the vesicovaginal fistula. The third fistula is the urethra and vaginal fistula. The fourth fistula is the rectum and vaginal fistula. This is the pessary. This is used in a prolapse patient when there is any emergency. Okay, and in the emergency we cannot do the surgery. Then the second one is the seen in the its second use is in the pregnancy. Third use is in the postpartum patient, and fourth use is when the patient is not fit for surgery. The last picture is of the trans obturator tape. Okay, and this is a procedure which we do in the stress urinary incontinence. Its another name is it's another stress urinary incontinence may urethra gets weak. Okay, and we have to strengthen the urethra by taping or sling. So that is what we do. And Birch Colpo suspension is the another surgery which is the choice. Okay, which is the gold standard. Anybody with any query, you are welcome. Any query on any topic?
Can we close the session if no queries? Okay, tocolytics contraception. Yes, let's take it. Tocolytics is better. Tocolytics they are not contraception. Doxap, they are not contraception. Okay, tocolytics. Let us study tocolytics. Tocolytics आर द टोको का मतलब है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस और लिटिक्स का मतलब है कि जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को कम करे. ठीक है, टोको मीन्स यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस एंड लिटिक्स मतलब जो उनको तोड़े, कम करे. ठीक है, तो बेसिकली नंबर 1 इज ड्रग ऑफ चॉइस. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टोकोलिसिस is calcium channel blocker, that is nifedipine. ठीक है, as you all know nifedipine causes vasodilation and tachycardia. This is its side effect. ठीक है, tachycardia. Okay, what is the drug of choice? तो nifedipine and the nifedipine is. बेटा कॉन्ट्रासेप्शन में क्या समझ नहीं आया, पूरा रिपीट करना है. ठीक है, दूसरे ड्रग्स जो इसमें हम यूज कर सकते हैं, बीटा एगनिस्ट. बीटा एगोनिस्ट कितने टाइप के होते हैं? बीटा एगोनिस्ट इस नंबर 1, इनके डिफरेंट नाम है, आपको याद रखने हैं. टर्ब्यूटालीन, आइसॉक्सुप्रीन, रिटोड्रीन. रिटोड्रीन. ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ये है. अब इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है. ठीक है, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. क्या क्या है इनके साइड इफेक्ट्स? वाजोडाइलेशन, ये आपका PYQ भी है पिछले बार FNG का. वाजोडाइलेशन, टेकीकार्डिया, ये थोड़ा सीवियर वाला करते हैं. ठीक है, इसीलिए इतना. ओके ओके, डन डन. टेकीकार्डिया, ठीक है, वाजोडाइलेशन, टेकीकार्डिया, इतना सीवियर वाजोडाइलेशन करते हैं कि पल्मोनरी एडीमा हो जाता है. ठीक है, पिछले साल क्वेश्चन क्या आया था? ये वाजोडाइलेशन बेटा जब भी प्री टर्म लेबर पेन्स हो, इंडिकेशन ऑफ टोकोलिसिस इज प्री टर्म लेबर पेन्स. Contraindication is bleeding in pregnancy. Bleeding in pregnancy. Okay? Is it okay? Pulmonary edema. पिछले साल का PYQ है, क्या है कि ये आयंस का क्या करते हैं, क्योंकि इनमें जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो सारे आयंस का हाइपो हो जाता है. हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया. इस वजह से बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है. और क्या हो जाता है बच्चा? बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और एज अ रिजल्ट हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है. ये चीजें पूछी थी पिछले बार PYQ में कि आयंस का क्या होता है, हाइपो हो जाता है, और ग्लूकोज का क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है. ठीक है, और कौन सा यूज कर सकते हैं हम? इंडोमिथासिन. इंडोमिथासिन इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर. ठीक है, ये क्या करता है? अगर इसको हम 32 वीक्स के बाद देते हैं तो ये क्या कर देता है? पेटेंट
ductus arteriosus. ठीक है, राइट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। वही मैग्नीशियम सल्फेट जो हम उसमें देते हैं, ठीक है, एक्लेम्सिया में देते हैं, वो टोकोलिसिस भी है, ठीक है, टोकोलिसिस भी करता है, ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कॉपर टी। एक मैंने बताना था मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है बच्चे के लिए। जैसे मदर के लिए ये न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, वैसे ये बच्चे के लिए भी न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, ओके। कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर टी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो देन बच्चा देयर इज 50% चांस ऑफ अबॉर्शन। तो कितने परसेंट चांस हो गया सर्वाइवल का? 50% चांस ऑफ सर्वाइवल, बच्चे की सर्वाइवल का, ठीक है। 50% चांस हो गया अबॉर्शन का, 50-50 मतलब दोनों तरफ 50-50 है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है टेक कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। उस बच्चे के पेरेंट्स अगर कहते हैं वी वांट टू कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कहते हैं वी वांट टू अबॉर्ट, तो वी विल अबॉर्ट। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो वी विल से इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉपर टी रिमूव करोगे कि नहीं करोगे, कॉपर टी रिमूव करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। सो उसका आंसर है कि वी विल वी रिमूव कॉपर टी और नॉट? यस, बताइए। अगर थ्रेड इज फेल्ट एट, इफ थ्रेड इज फेल्ट एट सर्वाइकल ऑस, अगर उस कॉपर्टी का थ्रेड सर्वाइकल ऑस पे है तभी हम उसको रिमूव करेंगे। अगर इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देन वी विल नॉट रिमूव इट, क्योंकि उसको रिमूव करने के चक्कर में प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी फेलियर हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
वेरी गुड। चलिए बताइए, अब और कोई प्रॉब्लम है कि शुड वी क्लोज द लेक्चर? सेशन क्लोज करें या कोई प्रॉब्लम है? दो ही चीजें पूछते हैं कॉपर टीम विद प्रेगनेंसी में, कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। अगर हम करेंगे अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो, हम नहीं करेंगे अगर पेरेंट्स नहीं बोलेंगे तो, क्योंकि 50% चांस है सर्वाइवल का, 50% चांस है अबॉर्शन का। फिर कॉपर्टी रिमूव करोगे कि नहीं करोगे? अगर धागा सर्वाइकल ऑस पे है तो कर देंगे, क्योंकि तब इजीली रिमूव हो जाएगी, वो इंटरफेयर नहीं करेगी प्रेगनेंसी के साथ। और अगर धागा सर्वाइकल ऑस पे नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है?